recording as well, because I don't feel like teaching today. Because what can I do? But we'll learn a little about acid bases and salts, a little history. Don't worry. But I was saying that. The problem with physics is, or the good thing about physics is, that it's very evident to everybody. You could literally see the effect of gravity, jump from like the top of any building, and you're gonna come down crashing and break your limbs and all of that stuff. You can see physics around. You could see friction. Rub your hands together, your hands are gonna get hot. For chemistry, you actually need a more sophisticated brain, right? Like a brain of Sir Suleiman. So you yeah, then obviously quantum physics is another field, right? I'm just talking about, theoretical physics, just the normal physics that you study in O levels. You don't study quantum physics in O levels. And at a higher level, you need to understand that physics and chemistry, they are very much intertwined, they're very much connected, they're very much interlinked. But at your level, physics is just shit. I'm sorry to sorry to say, but physics is just crap. Sorry for my language, everybody. Hajra bio is just ratta. What can I say? It's rote learning, and rattalization is not the best qualification to take first position in the CIE examination, like I say. But you guys also need to understand that a teacher plays a very important role. Like I say, 99% काम मेरा होता है, 1% आप लोगों को होता है, 1 भी नहीं, 0.1%, right? और वो 0.1% मुझे दिख रहा होता है कि क्लास में कितने बच्चे और कितने मौजूद हैं. But it's okay, I don't mind, because the problem is that teachers don't tend to understand that a student is sometimes not in the mood to study, not sometimes, all the time. But that's what a teacher needs to understand. That's why we have recordings available for like 2 days, more than 2 days. It's set for 2 days, but they are usually available for around 10 days, so that every student can cover their concepts and stuff. अब जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता, 10 दिनों में भी लेक्चर नहीं लेगा, उसका हम क्या ही कर सकते हैं. But yeah, other than that, everything is cool. Atina Buland Khan, you're 12 minutes late, huh? 8. You have a class at 8 p.m. But no, you guys have to show up at 8:12 to waste 12 minutes, and make sir feel like you have better things to do. Don't be sorry. You guys have your own priorities. But yeah, that's pretty much it. But I'm glad that students from my previous school are also joining in. I like it. Sorry sir, I was helping my niece with work. Like I said, Adina, better things to do in life than to take my lecture, Chalo ji, let's start. Gapshap bahut ho gayi hai. Today is obviously an introductory class, so we had certain leverage to just talk about random stuff. Now we're just gonna have a little introduction about the new topic. Yes, can I get a yes in the chat box, like Maha is saying? Yes. Let's have a yes in the chat box. Okay, yes, Gucci, we are all Gucci. Okay, so we'll be starting off with our new chapter, which is chapter number 7, acid, bases, and salts. Now, before we understand anything regarding what an acid is, what a base is, what a salt is, I'll give you guys a little history, in order to jog up that conceptual build of all of you, of what is my English doing? In order to, just develop a conceptual understanding, a little interest, ignite a little interest in your brains. That's what I was trying to say. Okay. So basically, where does this theory of acid, bases, and salt originate from? During the time of ancient Greeks, the properties of acids and bases were only vaguely understood, right? Ancient Greeks had this thing for categorizing substances and trying to bring balance and harmony and perfection to the universe, right? And they used variety of tests to distinguish substances and categorize them accordingly. So Greeks की ये सोच थी कि we can actually categorize everything, and once we are able to categorize everything, we'll be able to bring balance and harmony and perfection to this universe, right? And they use multiple tests for that. And one of these tests was actually taste. They divided substances based on or according to whether they tasted sour, bitter, salty, or like sweet, right?
And then obviously later on the Greek influence was passed on to the Romans, and the Romans then also began to refer to sour tasting substances like vinegar, lemon juice, oranges, malte. They started to refer to these sour tasting substances as acids. Right? And acids, the word acid or acidic is actually derived from a Latin word called acidus. And acidus in Latin means sour tasting. So that's basically the short history of how an acid was discovered, right? If we talk about bases by contrast were not as well studied. Although they were recognized as substances that would neutralize acids, this idea that bases were recognized as substances that would neutralize acids, this fitted the desires of the ancient Greeks and Egyptians and Romans, because they were like, okay, now there's a balance and we are getting closer to balance and harmony and all of that stuff. And then how was a base discovered? The easiest way, the word base is quite unusual. I don't know why we call it a base, but the way your base was discovered was that ancient Egyptians, they used to create bases by taking ashes. Do you know what wood ash is? Wood ash, ASH, ashes, murti. जब आप किसी इंसान को जलाते हो और उसकी मूर्ति होती है जो ashes, no, but wood ashes, right? So ancient Egyptians, what they used to do was they used to burn wood and they used to take their ashes, or wood ashes are basically known as potash. Potash is potassium carbonate. That's one of the earliest base which was discovered. So they used to take potassium carbonate or potash or wood ashes, and they used to obtain it obviously from fire. And this process, they used to mix it with animal fat. They used to take these ashes and mix it with animal fat. And when they used to mix these ashes with animal fat, they ended up with soap. And soap is actually bitter tasting. If you've ever had the opportunity as a young child to taste soap, it's actually very bitter tasting. Do you know what the difference between bitter and sour is? Sour is khatta. If you eat a lemon, that's khatta. If you drink vinegar or if you use vinegar, it's khatta. And like if you eat grapes, it's khatta. But bitter is basically talkh. It's like sa taste, So that's how, ancient Egyptians came across bases. And this process of making soap is still used by many Greeks. But what they do is they use ashes, and they don't use animal fat now. They use olive oil. And they use ashes and olive oil to make like fine homemade soap. And bases are also actually referred to as alkalis. So bases are referred to as alkalis, but there's a difference between the two, and I'll tell you at the end. But bases, they're usually acceptable. If you call it a base or if you call it an alkali, they're often interchanged, but who cares? We'll learn the difference in a while. And the reason why they're also known as alkali is because this was actually a discovery by the Egyptians who were Muslims and who were Arabic, and they called alkalis as alqali. And alqali is actually potash. Potash, jo potassium carbonate hota hai, that's known as alqali in Arabic. And that's how alkali changed into alkali, which later on changed into base. Alkali का मतलब पोटैश वैसे होता नहीं है, लेकिन alkali का मतलब होता है roasting. Alkali की जो literal definition है ना, that's basically roasting. And the reason why they called it alkali was because alkali का मतलब roasting होता है, or probably because potash was one of the earliest bases to be discovered. और potash किधर से आता था, potassium carbonate, ये किधर से आता था? By fire, from ashes, from roasting stuff, wood, and from getting ashes, और ये potassium carbonate. तो इसलिए शायद इसको alkali बुलाते थे. Alkali? Okay, alkali कह लेते हैं. And you guys might ask me, sir, why are they known as bases then? I don't know.
It's unclear as to why they changed alkali to bases. But both words are perfectly acceptable, and again, they're often interchangeable. But there's this difference between bases and alkali. Now I'll tell you the difference. Bases are basically, that's the bigger category. बेसिस के अंदर एल्कली आता है. क्या मतलब है? बेसिस आर बेसिकली योर मेटल ऑक्साइड्स. यूजुअली जो तल्ख टेस्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर योर मेटल ऑक्साइड्स और लाइक योर मेटल हाइड्रोक्साइड्स, राइट? एंड एल्कलीज आर soluble bases. All alkalis are bases, but not all bases are alkalis. Yes, you are right, but what's the reason to it? The reason is that alkalis are soluble bases. So those bases which can dissolve in water are known as alkalis. और alkali को आप base भी कह सकते हैं, लेकिन just to differentiate, alkali basically ऐसे इसको समझे कि base is the bigger umbrella, ना, bigger picture है. और उसके अंदर ये छोटी सी बात है कि जो बेस पानी में सॉल्यूबल होगा, दोज बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे आर सॉल्यूबल, दे आर नोन एज एल्कलीज. तो अगर मैं आपको एक समरी दूं हिस्ट्री की जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है, in summary, the first theory of acids came from ancient Greeks and Egyptians who defined sour tasting substances as acid or acidus. For example, lemons, oranges, grapes, vinegar, and so on and so forth. And bases were substances that tasted bitter, talkh, right? And for example, and they were also slippery in texture. Remember, bases are very slippery in texture. Like soap हो गया, आपका lime हो गया. What is lime? Do you know what lime is? Lime is चूना, जो आप दीवार पे नहीं लगाते. और maybe like Windex. Do you know what Windex is? जिससे आप अपनी गाड़ी की शीशे साफ करते हैं, नॉर्मल घरों में शीशे साफ करते हैं, मिरर क्लीनर्स जो होते हैं. तो ये सारे बेसिकली आपके बेसिस हैं. Now, this was the idea of acids and bases way before, like 200, 300, 400, 500 years ago. Not 500, even before that, like 1,000 years ago. But as science progressed, what you realized was that there came a scientist like Sir Suleiman, and his name was Arrhenius. Arrhenius was one day playing, like around 1884, he was playing around with certain substances. He was playing around with certain compounds. His full name is Savante Arrhenius, right? And he's playing around with certain compounds, and he observed something very particular. What he observed was that whenever he added a compound which had a hydrogen bonded to any group 7 or a polyatomic ion, जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोजन को कोई भी group 7 के साथ bond करे, like hydrogen bonded to chlorine, hydrogen bonded to fluorine, hydrogen bonded to iodine, hydrogen bonded to maybe bromine, this is hydrogen chloride, hydrogen fluoride, hydrogen iodide, hydrogen bromide, and hydrogen being bonded to a polyatomic ion like sulfate ion, phosphate ion, carbonate ion, so like H2SO4 हो गया, this is hydrogen sulfate, H3PO4 हो गया. We've already studied all of this. तो ये hydrogen phosphate, H2CO3 हो गया, hydrogen carbonate. So when he was playing around with these compounds, he noticed that whenever a hydrogen was bonded to any group 7, and obviously which type of bonding is this? Is this ionic bonding, or is this like simple covalent bonding? Ionic bonding or covalent bonding? Ionic covalent. This is obviously a covalent bonding because hydrogen is a non-metal, chlorine is a non-metal, and the bonding between non-metals is your covalent bonding, sharing of a pair of electrons. Remember, we've studied this. So whenever hydrogen was bonded with non-metals, or whenever it was bonded with sulfate, phosphate, or carbonate, he noticed when he added them to water, they all dissociated, or they all gave him the H plus ions. And he noticed that all of these substances were sour tasting. That's why he defined an acid as any substance when dissolved in water and it gives you the hydrogen ion, that's known as an acid. So उसने acid की definition ही बदल दी. Instead of calling it sour tasting, now science was progressing slowly and gradually. So he said that he tasted all of these. No, he just knew that they were sour tasting. So any substance which dissociates, I'll tell you what I mean by dissociates. Dissociate का मतलब है टूटना, which dissociates, or you could say ionizes in water
or when dissolved in water to give the hydrogen ion, to give H plus ion, he called that acid. Because he noticed that all of these substances were sour tasting. अब उसने असल में टेस्ट किया इनको, यानी कि उसने अगर टेस्ट किया तो उसके पेपड़े जल जाते हैं. सो नो, ही डिड नॉट टेस्ट इट. मे बी ही डाइल्यूटेड ऑल ऑफ देम, यू नो, बहुत ज़्यादा एसिड में बहुत ज़्यादा पानी मिला के उसने शायद टेस्ट किया. हु नोज, बिकॉज देन दैट वुड नॉट बी हार्मफुल टू यू. बिकॉज बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया. जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बहुत डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि आपके साथ अगर इन कॉन्टैक्ट भी आए तो इतना आपको ना जलाए. राइट? So that's what he saw. And when he wrote the equation for it, he said that, for example, if you take HCl and you add it to water, what is happening? It was dissociating or ionizing. It was breaking down into ions, and it gave him the H plus ion. And obviously, दूसरा क्या ion देगा? Because chlorine either, तो here you'll get the chloride ion, right? Chlorine is in group 7. So it has a 1 minus charge when it makes the ion. Yeah. Like for example, HF में when he added it to water, it gave him H plus and F minus. When he took H2SO4 and he added it to water, this was hydrogen sulfate. Now he got sulfuric acid. Remember, we've done all this naming. We've learned how to name acids and all of that in moles and stoichiometry. So it gave him the hydrogen ion and the sulfate ion. Sulfate ion has a 2 minus charge, right? And obviously the दो hydrogens and so obviously 2 hydrogen ions are being formed. Like H3PO4 उसने लिया, उसको पानी में ऐड किया, तो he got the hydrogen ions and he got the phosphate ion. और कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3 हाइड्रोजन्स इधर थे, तो obviously 3 हाइड्रोजन आयंस आए. And you can also represent it as HCl gas, ये था, and now you got HCl aqueous. But in order to show the examiner the dissociation of ions, you have to write it like this. You have to separately show the H plus ion and the Cl minus ion. HCl aqueous का मतलब ही यही है कि इसमें H plus ion है और Cl minus ion, लेकिन आपने examiner को ये तोड़ के show ये करना होता है, because the examiner always asks you about the equation of dissociation. तो equation of dissociation में आपने इनको तोड़ के show करना. Dissociate का मतलब ये होता है तोड़ना. Right? So that's what he realized. So any substance which dissociates or ionizes in water to give H plus ion is known as an acid. And all these substances were sour tasting. अच्छा, इसमें मैं ये ionizes का लफ्ज़ बार बार क्यों कह रहा हूँ? Ionizes, sir, dissociate तो समझ आ गई, टूट गया. Ionizes आप क्यों कह रहे हैं? The reason why I'm saying ionizes is because if you notice, and if you have a sophisticated mind like me, you will notice something very strange and very beautiful. Hydrogen chloride, is this a covalent molecule or is this an ionic compound? Hydrogen chloride, HCl gas, is this a covalent molecule or an ionic compound? Anybody? Covalent molecule? It's a covalent molecule. Covalent molecule, मैंने 10 दफा बता तो दिया. Okay. But when you look at the right hand side, what do you get? You actually get ions. It's not an ionic lattice, obviously. It's not a solid, but you get ions. H plus ion hai, Cl minus ion hai, because ion is any species with a charge, so they have charges. So you actually, there's a change in bonding, there's a change in chemical bonding. You are going from a simple covalent molecule to ions. That's why I'm saying it dissociates or it ionizes in water. What do I mean by it ionizes in water? HCl simple covalent molecule tha, add it to water, it ionizes, ions ban jate. और इन सब में कॉमन क्या है? The H plus ion. We don't care about the negative ion. Negative ion जो भी हो, we care about the H plus ion, because Arrhenius realized that the reason why they were all sour tasting was because they all had one thing in common, and that was the hydrogen ion. And that is the reason why he defined acid as any substance which ionizes in water to give the H plus ion. ये तक कहानी समझ आ रही है? आगे जाएं. अच्छा, वैसे थोड़ी सी मैं एग्जांपल्स कर लूँ आपके साथ. HBr added to water, HBr hydrogen bromide added to water, what do we get? HBr added to butter, what do you get?
it dissociates or it ionizes in water to give the H plus ion, and और जाहिर सी बात है ब्रोमाइड आयन बनेगा ना, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन इज इन ग्रुप 7, so ब्रोमाइड आयन बनेगा। और इसके साथ स्टेट सिंबल क्या आएगा, एनीथिंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर हैज एन एक्वस स्टेट सिंबल, और इधर ये क्या था, गैस था। अच्छा सवाल पूछ सकते सर गैस को आप पानी में कैसे मिला रहे हैं, एक ट्यूब लें, ट्यूब में इसको बबल कर दें, सो टेक अ ट्यूब एंड दिस गैस शुड पास थ्रू दैट ट्यूब एंड बबल इट, बबल इट इन वाटर, HBr। जब भी आप गैस को पानी में मिलाते हैं कैसे मिलाते हैं, ट्यूब लें, गैस को पानी में मिलाएं, ट्यूब से कनेक्ट करें। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज आई से यू हैव H2CO3, तो H2CO3 is hydrogen carbonate, and once you add it to water it will be carbonic acid। और ये क्या था, HBr was hydrogen bromide, once you add it in water what is it, we've learnt this naming guys, we've done this in Merlin's stoichiometry, hydrobromic acid, yes, IDE से IC बन जाते हैं और एसिड आ जाते हैं, और हाइड्रोजन से जेन कट के हाइड्रो रह जाते हैं। रिमेंबर, अगर नहीं याद तो मोल्स इन स्टोइकियोमेट्री का लेक्चर एक दफ़ा देख लें, नोट्स पढ़ लें, बिकॉज दीज नेमिंग्स आर गोना कम इन हैंडी इन दिस चैप्टर। ओके, सो H2CO3 को अगर मैं पानी में मिलाऊं, सो नाउ इट हैज़ हाइड्रोजन, इट्स बॉन्डिंग टू अ पॉलीएटॉमिक आयन, कोवेलेंट, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल था, बट वंस यू एड इट टू वाटर इट्स गोना डिसोसिएट और इट्स गोना आयनाइज टू गिव यू द H प्लस आयन एंड दिस CO3 2 माइनस आयन। और कितने H प्लसेस हैं, 2, वाई, बिकॉज यू आर 2 हाइड्रोजन, सो 2 H प्लस आयन्स बने। दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ डिसोसिएशन, मैं आपको इक्वेशन ऑफ डिसोसिएशन लिखवाना सिखा रहा हूँ। ओके, let's suppose you have H3PO4 and you add it to water, तो हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं मुझे, तो हाइड्रोजन देगा हमें, it will ionize to give you the hydrogen ion, so it will give you the hydrogen ion, and obviously phosphate के ऊपर 3 minus charge होता है, and you had 3 hydrogens, so obviously you'll have 3 hydrogen ions here. What will be the state symbol, aqueous, aqueous, and aqueous, oh sorry, not, this is not aqueous, this was like a gas, this is aqueous, this is aqueous, because now they have been dissolved in water. This was gas and then aqueous, aqueous. So I hope the equation is now understandable to some extent। और ये H plus plus Br minus हम examiner को show करते हैं, आप वैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि HBr went from HBr gas to HBr aqueous, and HBr aqueous का मतलब होता है H plus and Br 1 minus। हम कह सकते हैं कि H2CO3 went from H2CO3 gas to H2CO3 aqueous, और aqueous का मतलब यही होता है कि now it has dissociated into its ions। So we show the examiner this bit, but you can also know that H2CO3 aqueous का मतलब ही ये bit होता है। Yeah? Wow, Yusra is joining at 8:32. Great. Okay. So any substance, अब मैं थोड़ी सी definition को modify कर रहा हूँ। ये इसकी अच्छी definition है, और वैसे इनमें से कोई भी डेफिनेशन हम नहीं, पेपर में कोई भी नहीं लिखेंगे, पेपर के लिए अलग डेफिनेशन है, ये तो अभी कहानियाँ चल रही हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है। ओके, सो अर्हीनियस एसिड इज एक्चुअली डिफाइंड एज लाइक एनी सब्सटेंस, ऊपर क्या लिखा है मैंने, ऊपर से मिलता जुलता कर, एनी सब्सटेंस व्हेन which dissociates or ionizes in water, which ionizes in water, अब मैं थोड़ी डेफिनेशन अच्छी करने लगा हूं, टू गिव H प्लस आयन और ए प्रोटॉन और ए हाइड्रोनियम आयन। सर ये क्या लिख लिया आपने, प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, पढ़ाता हूँ प्रोटॉन क्या होता है। I'll tell you. Basically, when I talk about H plus ion, is basically the hydrogen ion. हाइड्रोजन की कोई मुझे ज़रा पीरियोडिक टेबल से बताए, what is the proton number of hydrogen and what is the nucleon number? 1 1. Ain't that right? 1 1 everybody. 1 1. Do you guys agree? 1 1 ही है ना? Okay, good. अच्छा, हाइड्रोजन की अगर हम न्यूट्रल हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें कितने प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। और कितनी न्यूट्रॉन है, 1 - 1 0 न्यूट्रॉन है। अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर अगर 1 प्लस चार्ज हो, कितने प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन नंबर डजंट चेंज बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन द न्यूक्लियस, दे आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस। वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रीवियसली इन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, राइट। तो प्रोटॉन नंबर तो चेंज नहीं करेगा। 1 प्लस का क्या मतलब है, इट हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, प्लीज हेल्प मी।
जीरो उनजेर, जीरो इलेक्ट्रॉन्स, कितनी न्यूट्रॉन्स है? जीरो न्यूट्रॉन्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1H plus is actually a proton? Can I say कि H plus is actually a proton? Can I say? H plus का मतलब प्रोटॉन होता है, ये एक प्रोटॉन ही होता है, और क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई न्यूट्रॉन नहीं, बस एक प्रोटॉन। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि एनी सब्सटेंस व्हिच आयनाइजेस इन वाटर टू गिव द H plus आयन, और मैंने स्लैश प्रोटॉन इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों एक ही बात है। हाइड्रोनियम आयन वैसे क्या भला होती है? लेट्स डिस्कस हाइड्रोनियम आयन। डायरेक्टली आपके कोर्स में नहीं, कोई MCQ वगैरह में टेस्ट हो सकता है। ओके, बेसिकली HBr गैस है, इसको मैंने पानी में मिलाया, क्या मिला मुझे? व्हाट डू आई गेट? HBr aqueous। और HBr aqueous का क्या मतलब है? यू हैव द H plus आयन एंड यू हैव द Br minus आयन। Ain't that true? Is this correct? इधर तक तो पढ़ लिए ना। Is this correct? Yes. Is this accurate? Okay. So we say that any substance which ionizes which ionizes in water to give the H plus ion or a proton is known as an acid. अब हाइड्रोनियम आयन मैंने क्यों लिखा है? बेसिकली अगर मैं इसकी पूरी इक्वेशन लिखूं, ये वाटर में इक्वेशन की ऊपर बार बार लिखी जा रहा हूं, राइट? ये वाटर में इक्वेशन की ऊपर बार बार लिखी जा रहा हूं। अगर मैं इसके साथ प्लस H2O लिखूं तो फिर आपके पास हाइड्रोजन आयन मैं शो कर लूंगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, दिस प्रोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम because it's a subatomic particle. You know, if you think about it logically, just think about it, how can a subatomic particle just exist alone? It's going to be very reactive. ये proton कहीं ना कहीं react करना चाहेगा, it's going to accommodate itself somewhere because it will not be, जैसे हमने पढ़ा था कि chlorine does not exist in the form of Cl, it exists in the form of Cl2y. Wait, I'm getting a call. Sorry. So we said that chlorine exists in the form of Cl2y because Cl in itself is very reactive. It will want to react with another Cl and form Cl2. Just like that, a proton does not exist alone, right? A proton will want to react. It only exists for like a split second. तो ये proton जो है ये पानी के साथ reaction कर लेता है, H2O, and this proton reacts with a lot of water which is present, right? तो H2O में जरा H plus add करें, क्या बनेगा? सारा जरा बस सिर्फ प्लस कर दें, H2O, यू हैव 2 हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन प्लस कर दें, सो यू गेट H3O, और एक प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज ऊपर लिखें। असल में ये नहीं होता, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बस ये फॉर्मूला ऐसे नहीं बनता कि इसमें ये ऐड कर दो और ये प्लस है, इसके पीछे लॉजिक है, इट्स कॉल्ड डेटिव बॉन्डिंग, बट दैट्स इन A levels। अच्छा, तो H2O में H प्लस ऐड किए, यू गेट H3O प्लस। दिस इज बेसिकली द हाइड्रोनियम आयन। So you need to understand reality. This is the reality of the situation. Reality क्या होती है कि HBr, when you reacted with H2O, it gives you the it gives you the Br1 minus ion obviously, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन बनता है वो इस पानी के साथ रिएक्ट करके you get H3O1 plus. This is the real equation. This is what happens in reality because hydrogen ion does not exist for a very long time. लेकिन साइंटिस्ट ने कहा यार ये बंदा बार बार H3O plus लिखे, बार बार H3O plus लिखे, बस सर साइंटिस्ट ने कहा ये H2O लिक्विड है, बस इसके साथ रिएक्ट किया, H plus आयन बना और Br1 minus आयन बना. That's it. So scientists simplified it for people like us, you know, and like you, mostly like you. मुझे तो पता है आप लोगों के लिए scientists dumbed it down for you. So scientists were like यार बार बार ये H, हमें पता है कि H plus अकेले exist नहीं करता, ये H2O के साथ react करता है और H3O1 plus बनता है, which is the hydronium ion. But who cares? We are just gonna simplify and write it as H plus और Br plus. तो ये भी ठीक है, पेपर में आप ऐसे करें, पेपर में आप ऐसे करें, दोनों ठीक है. Preferably do this because हायर PhD लेवल तक भी हम सिंप्लीफाइड वर्जन इस्तेमाल करते हैं. Sounds good? But this is the reality of the situation. तो हाइड्रोनियम आयन is basically the H3O1 plus ion. और ये बनता कैसे? Basically when the HBr dissociates or ionizes in water, it gives you the hydrogen ion and the bromide ion. But this hydrogen ion doesn't exist for a very long time. It's very reactive, so it reacts with water to give you the hydronium ion. And the reality of the situation is something like this. Okay? Sounds good? और अगर आप देखें तो नॉर्मली अगर मैं जेनेरिक एक फार्मूला बनाऊं, इन सब को देखूं मैं, अब देखिए इन सब में मैंने ये काम नहीं किया हाइड्रोनियम आयन वाला, बस मैंने सिंपल डायरेक्टली बिकॉज दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस एज वेल एज A levels एज वेल एज यूनिवर्सिटी लेवल, बस सही है. लेकिन यू नीडेड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस हाइड्रोनियम आयन वाज बिकॉज दिस इज टेस्टेड इन MCQs, यू नो. ओके,
और IGCSE का हिस्सा है। क्या बता रहा था, या व्हाई एम आई सो स्लो टुडे। अच्छा अगर इन सब का मैं एक जेनेरिक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो इन सब में कॉमन क्या है? इफ़ यू चेक ऑल दीज इक्वेशन दे हैव हाइड्रोजन इन कॉमन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और ये क्या है? दिस इज लाइक non-metal anion, anion, anion. Anion is basically the negative ion. Anion, 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 anion. So general equation इसका हम ऐसे लिखते हैं कि हाइड्रोजन उसके साथ कोई भी anion, that basically gives you the hydrogen ion and it gives you the anion. बस ये एक generic तरीका है इसको लिखने का। This is the general equation of acids. General equation क्या है? हाइड्रोजन किसी भी एनाइन के साथ हो, किसी भी नॉन मेटल के साथ हो, वो जब पानी में आप इनको मिलाएंगे, अभी मैंने पहले से पानी में मिला लिया है, तो you're gonna get the H plus ion and the anion. अगर आप देखें ये सारे इधर यही हो रहा है, हाइड्रोजन with the anion gives you the H plus ion and the anion. Hydrogen anion gives you H plus ion anion. Hydrogen anion gives you H plus anion. Hydrogen with the anion gives you H plus anion. So this is just like a general way of writing the equation for acids. और ये equation किसकी? This is the equation for Arrhenius acids. इन एसिड्स को अर्हीनियस ने चूंकि डिस्कवर किए थे तो अर्हीनियस कॉल्ड देम अर्हीनियस एसिड्स। अच्छा अगर मैं एक सवाल आप लोगों से पूछूं, लॉजिकल बातें मैं पूछ रहा हूँ, टुडे इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, आई एम डेवलपिंग योर इंटरेस्ट। कल से मतलब मंडे से हम सही पढ़ेंगे। ये चैप्टर बड़ा छोटा है, मजे का चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। सेब भी सीखेंगे, सेब में रंग कैसे होते हैं। ओके, इफ आई आस्क यू समथिंग, व्हेन यू ऐड एनी एसिड, सर व्हाट डज that word mean? What do you mean? What does that mean, that word? Which word? Anion? Yusra, I've said this. I've taught you what the word anion means. What does the word anion means? Anybody? Electrolysis में पढ़ा है, redox में भी पढ़ा है। Alphy वाला कैडी लफ्ज़ है। Alphy? What do you mean alphy? Apple. I was talking about apple. Alphy notes? What? Yusra, use the mic. I don't get what you are asking. एल्फीनियस नहीं है, अर्हीनियस है युसरा, इसका नाम था, इस बेचारे बंदे का नाम था अर्हीनियस एसिड। जिस बंदे ने सवांते अर्हीनियस वाज हिज एंटायर नेम। जुलेखा मर्ती की औरत। ओके, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स ओके। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था यार, मुझसे भूल गया क्या मैं कह रहा था, आई फॉरगॉट व्हाट वाज आई सपोज्ड टू से। मैन आई एम गेटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस यार, भूल ही गया हूँ क्या कहता। मैं आपको कोई बड़ी मजे की एक बात बता, हाँ, इफ आई आस्क यू गाइस कि व्हेन यू ऐड एन एसिड टू वाटर, ऑब्वियसली एसिड तभी बनता है जब पानी में होगा, व्हाट विल हैपन टू द H plus ions concentration? When you add an acid to water, बल्कि जब when an acid forms, what happens to the H plus ions concentration? Does it increase or does it decrease? मिसाल के तौर पे अगर आप पानी है, इधर वाटर है और इसमें आप HCl डाल रहे हैं और HCl की वजह से H plus और Cl1 minus ions बन रहे हैं, तो H plus की concentration को क्या होगा? जाहिर सी बात है increase होगा। So that's also one way of identifying an acid, that okay, it increases the concentration of H plus ion, it increases the concentration of H plus ions in an aqueous solution. कोई भी सोल्यूशन हो जिसमें पानी मिला और उसमें एसिड आप ऐड कर लें तो H plus ions की concentration बढ़ जाएगी। Why? Because an acid ionizes to give the H plus ion when dissolved in water. तो ये बढ़ाता है H plus ions की concentration। और इसी H plus ions की concentration की वजह से हम समझते हैं कि ये sour tasting होते हैं सारे। पहले एक थ्योरी होती थी कि पता नहीं कौन क्या नाम था, सकता है लजवानो और समथिंग लाइक दैट, एल से नाम शुरू होता था उसका। ही केम अप विद दिस वियर्ड एज थ्योरी। उसने कहा कि भाई जो sour tasting substance is because of the oxygens, because he was dealing with sulfuric acid and phosphoric acid and carbonic acid, इन सब में ऑक्सीजन था, तो उसने कहा था कि इन सब की जो sour tasting ability is because of the oxygen. But no, it wasn't because of the oxygen. Scientists realized कि सर फिर तो HCl में कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कोई ऑक्सीजन, ये फिर कैसे sour tasting? So they realized it was because of the hydrogen ion, not because of the oxygen. Why do they all have such weird names? Because Yusra, mostly they were Greeks, Egyptians. इजिप्शियंस तो कम ही थे, बाद बस इजिप्शियन ने थोड़ा काम किया, बाकी फिर हम गर्क हो गए, मुसलमानों ने फिर बिल्डअप नहीं किया इस पर। तो ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, तो इनके नाम ऐसे ही थे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। What can I do? Achha, similarly, Arrhenius was one day playing around with some other compounds. He was playing around with metal hydroxides.
and metal oxides. लेकिन हम सिर्फ hydroxide discuss करेंगे. He was playing around with metal hydroxides and he realized that whenever he added the metal hydroxides or metal oxides in water, it gave him the hydroxide ion. And he said, oh my god, these metal oxides and metal hydroxides are actually talkh. They're actually the bitter tasting substances. So that's how he came to know about the concept of a base. कि यार base are all those no, delete this, man. I don't like this. Please be respectful. Okay, I have deleted it. I can joke around, Hamad Saab, you guys can't joke around like that. Okay, so metal hydroxides, he said कि यार when he was playing around with these metal hydroxides, whenever he added them to water, it gave him the hydroxide ion, and he realized that all of them were bitter. Hajra, no, he did not taste them. ये कहानी तो मैं अपने से बना रहा हूँ कि वो ये कर रहा था. मुझे क्या पता वो क्या करते हैं. मैं आपको लोगों को समझाने के लिए कहानियाँ बना रहा हूँ. मुझे क्या पता. But yeah, and he realized that these compounds actually increased the concentration of hydroxide ions in water. For example, he was like, he was having this sodium hydroxide. Sodium hydroxide क्या है? साबुन. उसने साबुन पकड़ा, साबुन को पानी में मिलाया. जब पानी में मिलाया, he went from NaOH solid to NaOH aqueous. And NaOH aqueous क्या है? Basically, Na has a 1 plus charge and hydroxide ion तो हमें पता है it's 1 minus, right? So it gave him the hydroxide ion and the cation ion. Cation ion is the positive ion, right? Similarly, he was like, testing potassium hydroxide. पानी में मिलाया. जब पानी में मिलाया तो he got the K plus ion and the hydroxide ion. Then he was playing around with maybe calcium hydroxide तो खैर छोड़ दे. Barium hydroxide. And when he added it to water, it gave him the barium 2 plus ions and like the hydroxide ions. So चूंकि दो hydroxide ion बनी because you have 2 here on the left hand side. So that's what he realized. He realized that all these bitter tasting substances, they actually had one thing in common. And what was that thing in common? It was the hydroxide ions. So whenever you add a base, and he called them bases, right? So whenever you add a base in an aqueous solution, what happens to the concentration of hydroxide ions? What does the base do? Base है, मैंने इसको aqueous solution में add किया, sodium hydroxide को मैंने add किया, तो you got the Na1 plus ion and the OH minus ion. So what does the base do? It actually increases the concentration of hydroxide ions when ions in an aqueous solution or when added to an aqueous solution. That's what a base is. So that's also one identification of a base. और इनकी अगर मैं general equation लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ये part बदल रहा है, sodium, potassium, barium, this is changing. So this is like a metal, right? तो इसको इसने B से represent किया. और hydroxide सारा same to same है, तो this is OH and this is aqueous obviously. और what will this give you? This gives you the metal ion. So B के ऊपर 1 plus charge लगा लें. Just a generic general equation. I think just 1 second, I'm almost done. और ये क्या बना? ये hydroxide ion. So this is like a general equation for bases. और इस base को क्या कहते हैं? This is known as Arrhenius base. So Arrhenius base की definition अगर आप देखें, it's defined as any substance which ionizes to give the hydroxide ions, which ionizes in water to give the hydroxide ions. That's what an Arrhenius base is. That's the definition of a base. तो एसिड बेस की कहानी इधर बनी. और फन फैक्ट, अर्हीनियस बेचारा जो था, ये इसने अपनी डॉक्टोरल थीसिस में लिखा था. पीएचडी की जो थीसिस होती है उसको डॉक्टोरल थीसिस कहते हैं. तो उसमें जब इसने ये सारी कहानी लिखी ना, तो आप जैसे एक साइंटिस्ट बैठा था, वो जब उसका थीसिस चेक कर रहा था, उसने कहा ये क्या बकवास है, लाइक व्हाट इज दिस इज सच क्रैप, एंड ही गेव हिम द लोएस्ट ग्रेड फॉर हिज पेपर. His entire doctoral thesis was rejected, but later on, he was vindicated, उसको compensate किया गया, and then he was awarded Nobel Prize in Chemistry in 1903. तो ये इसकी सारी डिस्कवरी थी. और मजे की एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, then we'll stop the class and I'll take your questions. Whenever an acid reacts with a base, it gives you salt and water.
Whenever an acid reacts with a base, it gives you salt and water. That's why you needed to know the story of acids and bases. इसको क्या कहते हैं, ये कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, इंशाल्लाह हम मंडे को पढ़ेंगे. Salt is basically an ionic compound. पानी तो हमें पता है, salt ionic. ये वो salt नहीं है जो आप घर में पढ़ते हैं, वो भी एक salt है. घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं अपनी बिरयानियों में और खानों में, और वो भी एक salt है. लेकिन salt का मतलब सिर्फ वो नमक नहीं है. Salt is just an ionic compound. Can I say that NaCl is a salt? It's an ionic compound. Yes, it is. और ये वो salt है जो आप घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं. Can I say calcium chloride is a salt? Yes, it is a salt. Why? Because it's an ionic compound. Can I say magnesium chloride is a salt? Yes, it is a salt. Why? Because it's an ionic compound. हाँ जी, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. नर्ड हाजरा, वी नो दैट. वी विल बी टीचिंग, वी विल बी लर्निंग दैट टुमारो. मैं नहीं बताना चाह रहा था इसका नाम, आपने बता दिया. नर्ड अलर्ट. ओके, सॉरी हाजरा, सॉरी फॉर बोलिंग यू. ओके, तो ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है. लेकिन सॉल्ट का मतलब नहीं है कि सर बस सॉल्ट है तो खाई जाओ. रिमेंबर गाइज, ये आपके ओ लेवल्स का हिस्सा नहीं है. ए लेवल्स में आप पढ़ेंगे सॉल्ट्स के डिफरेंट पीएचएस होते हैं. सिर्फ ये सॉल्ट आप खा सकते हैं. अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड खाएंगे तो इट्स एक्चुअली पॉइजनस, इट विल किल यू. सो बी केयरफुल. आपको कोई बंदा कहे ये सॉल्ट है, आप कहें हो केवड़ा माइंस में जा रहा हूँ, सॉल्ट कैमरा माइंस में, सॉरी ज़्यादातर यही मिलता है. लेकिन कोई सॉल्ट बस आपको कहे ओए भाई सॉल्ट मिला है खा लो, केमिस्ट्री वाली सॉल्ट की बात करो, आप खाएंगे और आप यू जस्ट गेट पॉइजन्ड. सो सॉल्ट इज जस्ट एन आयनिक कंपाउंड, नॉट नेसेसरीली द सॉल्ट दैट यू ईट. वो भी सॉल्ट ही होता है. एनी क्वेश्चंस? दैट्स इट. सो इन समरी हमने पढ़ा कि एंशिएंट ग्रीक्स, इजिप्शियंस केम अप विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एसिडस व्हिच इज बेसिकली लाइक सावर टेस्टिंग. बेसिस का लफ्ज जो है पता नहीं बेस किधर से आ गया, उनको हम एल्कली कहते थे, एल्काली से निकला था. पोटैश was actually the first base to be discovered. wood ashes से bases क्या है, metal oxides और metal hydroxides होते हैं. और alkali are just soluble bases. bases बस just a bigger umbrella. और बस फिर सारी equations की, these are actually equations for dissociations. These are equations for dissociation of a base of an acid. ये dissociation की equation, ये नाम याद रखें, dissociation इक्वेशंस. ये आपके कोर्स का हिस्सा है. ये नाम असल में आपको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन इन इक्वेशंस को डिसोसिएशन इक्वेशंस कहते हैं. और बस यही पढ़ा है. और व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. एनी क्वेश्चंस? युसरा कह रही है सर मेरे से रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता. युसरा मैं कह रहा था छुट्टियां करो, मैं कह रहा था हैं लेक्चर्स ना देखो, नोट्स ना बनाओ, मेरी गलती थी. अगेन ओके गाइस, सॉरी. युसरा वाज एक्चुअली आस्किंग कि इसमें रेडॉक्स होता है कि नहीं. हाँ, ये गलती हुई थी. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग अगेन. युसरा को रेडॉक्स में मसला नहीं, उसको आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पढ़ा है. ओके.